डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश वाले जो सीरीज है वो अपन चालू करते हैं। डिस्टिंग्विश फॉलो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या है? रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। रिवर्स रेपो में क्या है? बोरोज मनी। रिवर्स रेपो बोरोज मनी। रेपो रेट लेंड्स मनी। इफेक्ट रेपो रेट ट्रांजेक्शन विल इंजेक्ट लिक्विडिटी। रेपो रेट क्या करती है? लिक्विडिटी को इंजेक्ट करती है। रिवर्स रेपो रेट एब्सॉर्ब्स द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। रेट इज रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन द रिवर्स रेपो लोअर देन द रेपो रेट। करंट रेपो रेट क्या है? 4%। करंट रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। नाउ हायर रेट इफेक्ट कमर्शियल बैंक विल बोरो लेस। कमर्शियल बैंक ट्रांसफर मोर फंड्स टू आरबीआई। अब इसमें क्या है? हायर रेट, अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो लेस करेगी, और अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को ना देके पैसा आरबीआई में पार्क कर देगी। ऑब्जेक्टिव कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय मेकिंग दैट कॉस्टली एंड कंट्रोल फॉर मनी सप्लाई। तो चल फटाफट मीनिंग: लैंड्स मनी, रेपो रेट लैंड्स मनी, रिवर्स रेपो रेट बोरोज मनी। इफेक्ट: इंजेक्ट लिक्विडिटी। रिवर्स रेपो रेट एब्सॉर्ब लिक्विडिटी। रेट ऑलवेज हायर। रिवर्स रेपो इज लोअर देन द रेपो रेट। करंट रेट 4%, वहां पे 3.35%। कमर्शियल बैंक विल बोरो लेस। कमर्शियल बैंक विल ट्रांसफर मोर फंड्स टू द आरबीआई। कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल टू द मनी सप्लाई। हो गया। नाउ second, distinguish between cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Cash reserve ratio is a specified minimum fraction of the total deposits of customers which commercial banks have to hold as reserves either in cash with the central bank. Liquidity maintained by the banks in specified percentage of its demand and time liabilities is known as SLR. जब डिमांड एंड liability के स्पेसिफाइड परसेंटेज में अगर अपन कुछ रखते हैं तो उसको एसएलआर बोलते हैं। फॉर्म: कैश रिजर्व रेशियो हैज टू बी मेंटेन बाय द बैंक्स इन कैश। ये कैश, गोल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी में भी रख सकते हैं। मेंटेनेंस विद कैश रिजर्व रेशियो इज टू बी मेंटेन इन फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई सीआरआर। कैश विद आरबीआई एसएलआर हैज टू बी मेंटेन इन कैश एंड अदर असेट्स बाय द बैंक इटसेल्फ। मतलब उसको अपने अपने से ही मतलब है, एसएलआर अपने बैंक में ही रखना है। पर्पस: कैश रिजर्व रेशियो कंट्रोल्स द एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। एसएलआर हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड होगी डिपॉजिटर्स की, उसमें उसमें हेल्प करेगी एसएलआर। करंट सीआरआर इज 3%, करंट एसएलआर इज 18%। फिर से एक बार फटाफट: कैश रिजर्व रेशियो इज अ मिनिमम फ्रैक्शन of the total deposit of customers which the commercial bank have to hold as reserves in either in cash with the central bank. SLR क्या है? Specified percentage of in demand and time liability is known as SLR. Cash reserve has to be maintained by the banks in कैश, गोल्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मेंटेनेंस विद कैश विद आरबीआई सीआरआर, आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। और एसएलआर कैश एंड अदर असेट्स बाय द बैंक एक्सेल। फिर पर्पस: कैश रिजर्व रेशियो कंट्रोल द एक्सेस मनी फ्लो एंड एसएलआर अनएक्सपेक्टेड डिमांड अगर आ गई तो उसको टैकल करने के लिए है। करंट सीआरआर इज 3%, करंट एसएलआर इज 18%। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन अपीलेट ट्रिब्यूनल in the court. The court refers to places where justice is administered or refers to the judges who exercise judicial function। मतलब कोर्ट क्या होता है? जो अपन जस्टिस कोर्ट में जाता है वो। ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशल अल्टरनेटिव institutional mechanisms usually brought into existence by or under the statute to decide disputes arising with reference to the particular statute or to determine controversies arising out of administrative law। मतलब जो स्पेसिफिक स्पेशल लॉ के आधार पे जो बनाया जाता है, स्पेशल स्टैट्यूट के आधार पे जो कोर्ट बनाया जाता है, उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। टाइप्स: कोर्ट्स रिफर टू द सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल्स कैन बी ईदर प्राइवेट ट्रिब्यूनल्स सच एज आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रिब्यूनल्स ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स। कोड ऑफ प्रोसीजर: इस पे सीपीसी लगता है। कोड ऑफ प्रोसीजर इस पे सीपीसी लगता है, इस पे कोई कोड नहीं लगता। अपने अपीलेट ट्रिब्यूनल पे कोई कोड नहीं लगता। फिर कोर्ट वैरायटी ऑफ केसेस पे देखती है। जो अपना अपीलेट ट्रिब्यूनल वो सिर्फ स्पेसिफिक केसेस जो उसको हैंडल करना है उसको ही देखता है। हेडेड बाय जज, पैनल ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, चेयरपर्सन एंड अदर जुडिशियल मेंबर्स इसको होल्ड करता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन एंड अदर जुडिशियल मेंबर्स। फिर पार्टी: कोर्ट जजेस आर इम्पार्शियल, आर्बिट्रेटर एंड नॉट द पार्टी टू द डिस्प्यूट। ट्रिब्यूनल में भी पार्टी टू द डिस्प्यूट, मतलब उसके अगेंस्ट ही केस हो सकता है। इसका एग्जांपल पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर एनसीएल। तो फटाफट फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था मीनिंग। जस्टिस इज जस्टिस जहां पे एडमिनिस्टर करते हैं वहां उसको कोर्ट बोलते हैं। ट्रिब्यूनल्स स्पेशल ऑल्टरनेटिव्स जो स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। टैक्स: सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल्स कैन बी इधर प्राइवेट ट्रिब्यूनल्स सच एज आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कोड ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है, अपने कोर्ट में सीपीसी फॉलो होता है। यहाँ पे
कोई फॉलो नहीं होता। फिर वैरायटी ऑफ केसेस, यहाँ पे से स्पेसिफिक केसेस देखा जाता है, जज पैनल ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट होता है, यहाँ पे चेयरपर्सन एंड अदर जुडिशियल मेंबर्स होता है। नाउ कोर्ट जजेस आर इम्पार्शियल, यहाँ पे पार्टी टू डिस्प्यूट भी अपना अपीलेट ट्रिब्यूनल हो सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी या फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नाउ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर Depository receipts are physical certificates which allow investors to hold shares in equities of other countries. Other countries की equities में अगर हम करते हैं तो उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। foreign currency convertible bonds which are bonds issued by an Indian company expressed in foreign currency and the principal and interest in respect of which is paid in foreign currencies payable in foreign currency is known as FCCB foreign currency convertible bonds। ट्रेडिंग एडीआर are typically traded एडीआर यूएस में एडीआर एडीआर यूएस में होता है, एडीआर यूएस और जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। एफसीसीबीज आर नॉट ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एफसीसीबी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती, वो ट्रेड नहीं होती फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिटरी डीआर आर इज बेसिकली और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्वाजी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। एफसीसीबी क्वाजी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेचर डिपॉजिटरी डीआर रिप्रेजेंट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। एफसीसीबी कैन बी एक्सचेंज फॉर इक्विटी शेयर्स एट द लेटर डेट, मतलब ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं एफसीसीबी। ये सिर्फ बेनिफिशियल इंटरेस्ट दिखाते हैं। नाउ इन्वेस्टर्स ऑप्शन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर नथिंग बट द shares denominated in the foreign currency and investor get the return just like dividend. Investor can also sell or transfer to the other person. Investors have the option to convert FCCBs into shares or GDRs. If investors choose to hold the bond till maturity, the company has to redeem them at the maturity date. तो फिर से एक बार क्या है एडीआर और जीडीआर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड एफसीसीबी। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट अब फिजिकल सर्टिफिकेट्स विच अलाउ अदर कंट्रीज, एडीआर और जीडीआर होते हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट में ये इंडियन कंपनी के शेयर, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, मीन्स बॉन्ड इशूड बाय द इंडियन कंपनी एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस होते हैं और इसका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेबल इन द फॉरेन करेंसी। एफसीसीबीज आर नॉट ट्रेडेड, एडीआर एंड जीडीआर इज ट्रेडेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज एंड जीडीआर इज ट्रेडेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। डिपॉजिटरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्वाजी डेट इंस्ट्रूमेंट है। डिपॉजिटरी रिप्रेजेंट्स beneficial interest in the shares and FCCBs are exchanged for equity shares at a later date after the issue. Depository receipts are nothing but the shares denominated in foreign currency, just like they get dividend. Investors have option to convert FCCBs into shares or GDS. If investors choose to hold the bond till maturity, redeem at the maturity date. ECBs and FCCBs, ECBs and FCCBs मतलब external commercial bonds, external commercial borrowings and foreign currency convertible bonds. ECBs refer to the commercial loans in the form of bank loans, securitized instruments, buyers credit, suppliers credit, etc. ये जो अपन ने पहले ईसीबी वाला चैप्टर में देखा है वो एफसीसीबी मींस अ बॉन्ड इश्यू, जो ऊपर पड़ा है वो ईसीबी इज बोरोइंग एंड इज दस प्योरली, ये बोरोइंग है एंड इज दस प्योरली अ डेट इंस्ट्रूमेंट। वहां पे अपन ने बोला हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, क्वाजी डेट इंस्ट्रूमेंट है। ECBs are to be availed as per the relevant guidance, notifications and circulars by the RBI. FCCs are required to be issued in accordance with the scheme, that is foreign currency convertible bond and ordinary shares through depository receipt mechanism scheme 1993. Since ECB is borrowing loan, it cannot be listed, वो लिस्टेड तो नहीं होगी, कहाँ से होगी, वो बोराइंग है तो वो लिस्टेड कहाँ से होगी। एफसीसीबीज कैन बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द कन्वर्जन इनटू शेयर्स, मतलब अगर वो बॉन्ड कन्वर्ट हो गई अपनी कंपनी के शेयर्स में तब उसको लिस्ट करा जाता है, जनरली शॉर्ट टर्म एंड दिस आर जनरली लॉन्ग टर्म। तो फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। ईसीबीज कमर्शियल लोन्स होते हैं, कहाँ से मिल सकता है, बैंक लोन, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, 3 years वाला। एफसीसीबी मींस ऊपर देख लिया। ईसीबी बोरोइंग एंड इज जैसे ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, क्वासी डेट इंस्ट्रूमेंट। फिर आरबीआई टाइम टू टाइम करता है प्रोसीजर। ईसीबीज आर टू बी अवेल्ड एज पर द रेलेवेंट गाइडलाइंस, आरबीआई की जो गाइडलाइंस और सर्कुलर्स होता है इसके हिसाब से होती है। एंड दिस आर टू बी इशूड अकॉर्डिंग टू द स्कीम लिस्टिंग। ECBs लिस्ट नहीं होते, FCCBs कैन बी लिस्टेड, they are generally short term, they are generally long term. Now distinguish between banks and NBFC. बैंक और NBFC का डिफरेंस है, बैंक और NBFC। Bank is a RBI authorized financial institution that aims to providing banking services to public. NBFC is a company engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures and securities issued by government or local authority or other marketable securities of a like nature. ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स, ये मेन डिफरेंस है। बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, NBFCs कैन एक्सेप्ट ओनली टर्म डिपॉजिट्स बट नॉट द डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिमांड डिपॉजिट NBFC नहीं ले सकती। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बैंक्स फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, NBFCs डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। चेक, बैंक्स कैन इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ,
अपने ऊपर जो चेक्स ड्रॉ किए वो कर सकते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक्स। जो चेक्स इश्यू करती है वो सिर्फ बैंक कर सकती है, एनबीएफसी नहीं कर सकती। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स आर टर्म्ड एज क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट थ्रू मनी मल्टीप्लायर एक्टिविटी। मनी मल्टीप्लायर एक्टिविटी अपन को पता है कि रोटेशन जो होता रहता है वो। एनबीएफसी कैन नॉट बी टर्म्ड एज क्रिएटर्स ऑफ द क्रेडिट। बैंक्स को क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, बैंक्स को क्रिएटर्स ऑफ द क्रेडिट कहा जाता है। ट्रांजेक्शन सर्विसेज, बैंक्स प्रोवाइड वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन सर्विसेज, एनबीएफसी डू नॉट फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन सर्विसेज। मतलब जो एंसिलरी सर्विस है, इंटरनेट बैंकिंग और वो सब देना, वो बैंक करती है, एनबीएफसी नहीं करती। रिजर्व रेशियोज, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियोज विद आरबीआई, एनबीएफसी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियोज विद आरबीआई। बैंक्स को आरबीआई के साथ रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है, एनबीएफसी को नहीं करना है। डिपॉजिट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। डीआईजीसी वाला जो इंश्योरेंस वाला जो होता है वो बैंक्स को अवेलेबल होता है, अपन को एनबीएफसी को नहीं होता। तो फिर से एक बार, आरबीआई बैंक्स आरबीआई ऑथोराइज बैंकिंग सर्विसेज होती है, ये भी वही है। डेफिनेशन तो दोनों में सेम ही है कि बैंक्स लोन एडवांसेस और वो सब देती है। डिमांड डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट ओनली टर्म डिपॉजिट बट नॉट द डिमांड डिपॉजिट्स। Banks form part of the payment and settlement systems. NBFCs do not form part. Checks. Banks can issue checks. NBFCs cannot. Creators of credit cannot be termed as creators of credit. Transaction service, variety of transaction service provide करती है। NBFCs do not facilitate variety of transaction services. Reserve ratios, आरबीआई के साथ बैंक को बहुत सारा रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है, एनबीएफसीज को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डीआईजीसी इंश्योरेंस जो है वो बैंक्स को मेंटेन करना होता है और इन लोगों को एनबीएफसी को नहीं करना होता है। The Competition Act 2002 is an improvement of the MRTP Act 1996, critically analyze कंपटीशन एंड एमआरटीपी का जो अपना है वो है कंपैरिजन है टू प्रमोट कंपटीशन, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, टू कंट्रोल मोनोपोलीज, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, प्रोहिबिशन ऑफ इकोनॉमिक मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, डोमिनेंस। नॉट प्रोहिबिटेड इसमें है ना, इसमें डोमिनेंट पोजीशन नॉट प्रोहिबिटेड, बट द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज बैड एंड डोमिनेंस इज बैड एज पर एमआरटीपी है। कॉम्बिनेशन रेगुलेशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन है, डज नॉट प्रोवाइड एनी सच रेगुलेशन। इसमें कॉम्बिनेशन का अपने कंपटीशन एक्ट में है, पहले नहीं था। फिर पेनल्टीज, इंपोजिशन ऑफ पेनल्टीज फॉर वायोलेशन ऑफ एक्ट, डज नॉट प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज, डज नॉट प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज, डज नॉट प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज। इस क्योंकि इसमें अब पहले है ना क्रिमिनल लायबिलिटी बोला जाता था, अब वो सिविल लायबिलिटी है। एडवोकेसी प्रोविजन, नो एडवोकेसी प्रोविजन रिक्वायर्ड। कॉम्पिटिशन एडवोकेसी प्रोविजन फॉर सीसीआई इन इंडिया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, does not provide extraterritorial jurisdiction beyond India. Competition Commission of India is vested with extraterritorial jurisdiction. From the above difference, we can clearly see the Competition Act is an improvement on the MRTP Act 1969. Then pecuniary and territorial jurisdiction in the district forum. Jurisdiction of the district forum. The district forum shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods and services and the compensation shall not exceed rupees 1 crore. A complaint shall be instituted in the district forum within the local limits of whose jurisdiction the opposite party of each of the parties where there are more than one at the time of institution of the complaint ordinarily resides or carries on business or as a branch office or personally works for gain. कहाँ पे कर सकती है? jurisdiction में जहाँ वो ordinarily reside करता है, business है उसका, branch office है और personally works for gain or any of the opposite parties where there are जहाँ पे any of the opposite parties where there are more than one at the time of institution of the complaint actually and voluntarily resides or carries on business। सामने वाले के भाई सेम के भाई कहाँ पे केस कर सकते हैं, ये वही है जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो क्या है। फिर distinguish between contract of service and contract for service. A contract of service is an agreement whereby a person agrees to comply, whereby a person agrees to employ another as an employee and the employee agrees to serve his employer as an employee। मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है, देयर एग्जिस्ट अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस देयर इज नो मास्टर रिलेशनशिप, नो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। एग्जांपल, एक्स लिमिटेड एम्प्लॉयज मिस्टर राम कंपनी सेक्रेटरी, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एक्स लिमिटेड अपॉइंट्स मिस्टर राम एज सेक्रेटरियल ऑडिट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मतलब एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब क्या है? तुम्हारे तुम्हारे वहां काम करने के लिए रख दिया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब कुछ सर्विस कोई पार्ट के लिए अपने अपॉइंट कर रहे हो उसको। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द एम्प्लॉय इज बाउंड टू वर्क अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर। इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस अ पर्सन एग्जीक्यूट्स हिज वर्क एज पर हिज ओन स्किल एंड एक्सपीरियंस। इजी है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में
एग्जाम्पल अपने देख लिया, कंपनी सेक्रेटरी को एम्प्लॉय किया, यहाँ पे सेक्रेटरी और ऑडिटर के लिए सिर्फ काम दिया उसको, सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयर में काम करना पड़ता है, यहाँ पे अपनी ओन स्किल एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कर सकता है। नाउ distinction between seizure of an essential commodity and confiscation of an essential commodity under the essential. Seizure means to take possession contrary to the wishes of the owner of the property. Confiscation means to take possession and ownership contrary to the wishes of the owner of the property. मतलब seizure means to take possession contrary to the wishes of owner of the property. Confiscation means to take possession and ownership contrary. इसमें सिर्फ possession मिलती है, इसमें सिर्फ possession, सीजर में सिर्फ possession मिलती है, इसमें possession and ownership दोनों ट्रांसफर हो जाती है। फिर सीजर पहला स्टेज है, confiscation is a second stage। फिर property and goods remains with the owner, प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन, ओनरशिप तेरे पास है भाई, प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट रिमेन विद ओनर, आ जाती है मेरे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। फिर disposal of goods, since goods cannot be disposed by the government, confiscated goods can be disposed by the government। चल फटाफट, सीजर मीन्स टू टेक पोजीशन contrary to the wishes of the owner of the property। confiscation means to take possession on ownership contrary to the wishes of the owner of the property। seizure is the first stage, confiscation is followed by seizure, confiscation is the second stage। property in goods remains with the owner, property in goods does not remain with the owner। disposal, seized goods cannot be disposed by the government, confiscated can be disposed। commodity can be seized as per section 3, यहाँ पे section 6A लगेगा। हो गया कॉन्फिस्केशन एंड सीजर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शायद कल भी आ सकता है। नाउ distinguish between vested and contingent interest। vested interest is provided as per section 19, contingent interest is provided as per section 21 of the TOPA। it is present right to the future position। vested interest, it is a present right to the future position। a contingent interest depends on the fulfillment of some conditions which may or may not happen। contingent interest क्या है कि कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो अपन वो इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास, वरना नहीं आएगा। right of ownership, this right is created as soon as the interest is vested। this is a mere chance to be having the ownership rights। takes effect, a vested interest takes effect from the date of transfer। vested interest मतलब जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन से तेरा vested interest है। contingent interest, a contingent interest in order to become vested is conditioned by the contingency which may not occur। मतलब अगर नहीं हुआ तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर a vested interest cannot be defeated by the death of transferee before he obtains possession। a contingent interest may fail in case of death of transferee before the fulfillment of condition। if a land is given to Kalyani for life, for life with a remainder to Piyusha, Kalyani's right is vested in possession, Piyusha's right is vested in interest। a gift to Akash on the marriage of Mahesh creates a contingent interest for Mahesh may never marry at all। मतलब अगर ये सलमान खान वाला एग्जाम्पल हो गया कि भाई अगर सलमान खान की शादी होगी तो ही मैं ये काम करूंगा, अगर वो नहीं करेगा तो ये काम नहीं होगा ना, तो वो कंटिजेंट इंटरेस्ट है। तो यही बात हो गई वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 90, कंटिजेंट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21। मीनिंग it is a present right to the future possession। it is a contingent interest depends upon the fulfillment of some conditions which may or may not occur। fulfillment of some conditions which may or may not occur। this right is created as soon as the interest is vested। this is a mere chance to be having the ownership rights। takes effect, a vested interest takes effect from the date of transfer, and a contingent interest in order to become vested is conditioned by contingency which may or may not occur। date of transfer, डेथ हो गई तो भाई नहीं मिलेगा। चल फिर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। वाह क्या शानदार डेफिनेशन है। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened or anything fastened to anything attached to the earth। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स, इंक्लूड लैंड, benefits from land, third things attached to the earth, things to earth, और फोर्थ परमानेंटली फास्टेंड। बस तो चार चीज आती है, हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर डेफिनेशन इन टोपा, टोपा एक्ट 1882। द एक्सप्रेशन मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड बाय द टोपा। चलो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी की तो अपनी जो डेफिनेशन है वही है। Section 3 of the Transfer of Property Act 1882 defines the term immovable property negatively। it says that the immovable property does not include standing timber, growing crops and grass। मतलब ये तीन चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होते, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास।
तीन चीजें इंक्लूड नहीं होती टोपा की डेफिनेशन के अनुसार। और अपने जो जनरल प्रोसेस में देखा, लैंड, बेनिफिट्स फ्रॉम लैंड, थिंग्स फास्टन टू द अर्थ एंड परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, तो हो गया। फिर इट कैन बी ओरल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी ओरल और रिटन मूवेबल, इट इज जनरली रिटन कॉन्ट्रैक्ट। रजिस्ट्रेशन, जनरली रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। शिफ्टेड और मूवेबल, it can be shifted or movable without loss or damage, it cannot be shifted or transported without any loss or damage, and if transported it will lose its original shape, capacity or quality. Following has been held to be government promissory notes, royalty, right to recover, maintenance, copyright, decree, machinery with which is not permanently attached. फिर यहाँ पे राइट्स ऑफ फेरी, राइट ऑफ फिशरी, हेरिडिटरी ऑफिसेज, राइट टू वे, तो रिवर्जन प्रॉपर्टी ऑफ लीज, फैक्ट्री, चलेगा, कुछ है नहीं उतना, सिर्फ उतना याद रख। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मस्त डेफिनेशन है। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो डेफिनेशन है। पहली, लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ। देन it does not include standing timber, growing crops or grass. It can be oral or written, it is generally written consent. Generally registration is optional, registration is compulsory, shifted or movable, it can be shifted or moved without damage, it cannot be shifted or transported without any loss or damage, and if transported it will lose its original shape, capacity, quality or quantity. Nice. Sure. Distinguish between conditions restraining alienation and conditions restraining the enjoyment. Conditions restraining the alienation. Conditions restraining alienation means transferor restrains transfer from parting with or disposing the property. Conditions restraining enjoyment means transfer restrains transfer from enjoying of property. मतलब कुछ part enjoy मत कर भाई. फिर validity of transfer, where property is transferred subject to condition absolutely restraining the transfer from parting with or disposing the property. The transfer is valid but condition is void. Though absolute restraints are bad in law, partial restraints are valid if conditions imposed are reasonable. Restraint on the enjoyment of the property is invalid. When land is transferred by one to another, the transferor should not impose conditions as to how and in what manner the transferee should enjoy the property. This is dealt in section 11. This is dealt in section 10. Ram gives property to Shyam, adding a condition that if the property is alienated, it should revert to now. The transfer is valid and takes effect, but the condition not to alienate the property is void. The transferee can ignore such condition. Alia sells her house to Babita, and Babita adds a condition that only Babita should reside in that house. Here again, transfer is valid, but the condition is invalid. Alia cannot put such condition on Babita regarding enjoyment of property. Babita can ignore such condition. Now, lease and license. Lease of immovable property is a transfer. Lease of immovable property is a transfer of right to enjoy the property. A license is a right to do or continue to do in or upon the immovable property of the grantor something which would, in the absence of such right, be unlawful. मतलब लाइसेंस क्या है कि तुम क्लास में आ रहे हो तो वो तुम्हारा एक लाइसेंस है, तुम लीज पे नहीं आ रहे हो, तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट। मतलब कोई शॉप रेंट पे, कोई लीज पे दी है तो आप उसको लीज भर भर के पेमेंट कर करके, रेंट का पेमेंट कर करके आप उसको एंजॉय कर सकते हो। पोजेशन, अ लीज इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट followed by the possession of the property for a specified period. In case of license, the legal possession continues to be with the owner of the property, but the license is permitted to make use of the premises for a particular purpose. मतलब अगर एक स्टूडेंट वहां पे क्लास पे आ जा रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पापा की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती, वो क्लास ओनर की होती है, तो वो अपना एक लाइसेंस है। फिर एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन द केस ऑफ अ लीज there is a transfer of right to enjoy the property. In case of the license, there is something less than a right to enjoy the property in the license. These would amount to transfer of property. A mere license does not create interest in the property to which it relates. Then transfer. The lease is both transferable and heritable. License is personal to the grantee. It is neither transferable nor heritable. मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे लाइसेंस दिया है क्लास में बैठने के लिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते भाई मेरा एक दिन मेरा दोस्त चला जाएगा, दूसरे दिन कोई और चला जाएगा, तो भाई पर्सनल है, ग्रांटी के लिए पर्सनल है। इट इज नीदर ट्रांसफरेबल नॉर हेरिटेबल. Lease comes to an end only in accordance with the terms and conditions stipulated in the contract. License can be withdrawn at any time at the pleasure of the grantor. मतलब जो टीचर अपनों को राइट दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है कि भाई तुम क्लास में आना, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है नहीं आने का बोलने के लिए। तो हो गया इजी। लीज lease of a movable property is a transfer of right to enjoy the property. License is right to do or continue to do. इजी है भाई, ये थोड़ा उतना है नहीं तो चलेगा। चलो, distinguish between sale and contract for sale. Sale has been defined as the transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised or part paid and part promised. Essential of a valid sale. Owner must be competent to contract. Subject matter must be immovable property. There is a transfer of ownership. It is for consideration which is in price. It is between two or more
persons. Contract for sale includes both a present sale and a contract to sale at a future time. A contract for sale for the sale of a immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. A contract for the sale of immovable property differs from a contract for the sale of goods in that the court will grant specific performance of it unless special reasons of the contrary are shown. तो इसमें क्या है, contract for sale includes both a present sale and a contract to sell at a future. Contract for sale में दोनों हो सकता है. सेल में क्या है भाई, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्राइस पे हुई या फिर पार्टली पे हुई या फिर पार्ट प्रॉमिस्ड हुआ तो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, प्रेजेंट सेल या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट अ फ्यूचर टाइम. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स settled between the parties. फिर a contract for the sale of immovable property differs from a contract for the sale of goods in that court will grant specific performance of it unless special reasons of the contrary are shown. Then distinguish between sale and exchange. Sale has been defined as a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or partly promised when two persons mutually transfer. भाई mutually transfer कर ले अगल बगल में, तो the ownership of one thing for the ownership of another कुछ भी है चलेगा. In sale whole or part consideration should be money. Money consideration is not involved. Exchange में कहाँ money होगा भाई. Section 54 of the TOPA deals. Section 54 deals with the sale. Section 118 to 121 of TOPA deals with the exchange. Now, actionable claims and mere right to use. Actionable claims referred in Section 3, Section 6 of the TOPA. Actionable claims is a claim to an unsecured debt which a civil court recognizes as affording grounds for relief for the person who claims it. मतलब actionable claims क्या है? Actionable claims which can be validly transferred. A mere right to sue cannot be. The right to sue is a personal right available to the party to contract to in the case of breach of contract by other party. A mere right to sue cannot be transferred. मतलब अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं ही कर सकता हूँ या फिर मेरा लीगल है या फिर जो पार्टीज दिए वो. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी और को ही दे दूं कि भाई तू जाके केस कर ले रहा. ऐसा नहीं हो सकता. एक्शनेबल क्लेम विच कैन बी वैलिडली ट्रांसफर. एक्शनेबल क्लेम्स अमन एग्रीज ऑन 1/2/2019 टू डिलीवर 1000 गन्नी बैग्स टू बल्लू on 1/3/2019. On 1/2/2019, Ballu assigns interest in the contract to Chirag. Aman fails to deliver the goods on 1/3/2019. Chirag can sue Aman because a beneficial interest in the subsisting contract which relates to movable property is an actionable claim which can be validly transferred. Now, इसमें क्या है? Ram commits assault on Ballu. Ballu can file a suit to obtain damages, but Ballu cannot assign the right to Chandan and allow him to obtain damages. If A breaks a contract which he has entered into with B, B can bring damages action for damages, but B cannot transfer this right to C to record damages. मतलब यही मैंने जो बोला कि अगर तूने किसी के साथ गलत किया अगर तो तू क्लेम कर सकता है, किसी और को नहीं दे सकता कि भाई तू जाके केस कर ले उसके ऊपर क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है. ये नहीं हो सकता. फिर मॉर्गेज और चार्ज. मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ securing payment of money advance. Although in a charge, the property is a mortgage is a transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing payment of money advance. Although in a charge, the property is made a security for the payment of the loan, yet the transaction does not amount to the mortgage. Transfer of interest in mortgage, there is a transfer of interest in the property. In charge, there is no transfer of interest in the property created. A mortgage can only be created by the act of the parties. A charge may be created by act of parties or by the operation of law. A mortgage deed must be registered and attested by the two witnesses. A charge need not be made in writing, and if reduced to writing, it need not be attested or registered. Foreclosure in certain types of mortgage, the mortgage can foreclose the mortgage property. The charge holder cannot foreclose, though he can get the property sold as in a simple mortgage. Personal liability in a mortgage, there can be a security as well as personal. There can be security as well as personal liability. In charge, the remedy of the charge holder is against the property only. मतलब charge मतलब मॉर्गेज क्या है? गिरवी रखना, किसी के पास गिरवी रख के पैसे ले लेना. चार्ज क्या है? चार्ज भी एक तरीके का वही है कि सिक्योर्ड कर दिया तुमने. बैंक के पास चार्ज क्रिएट करता है कि बैंक को अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी और उस पर जो चार्ज होता है वो लिया जाता है. मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज में क्या होता है? अगर अपन गिरवी रखते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है. इन चार्ज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट. मतलब वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अपन ने चार्ज रजिस्टर करवाया, उसमें प्रॉपर्टी उसको दे देनी नहीं है. फिर mortgage can only be created by act of parties. A charge may be created by act of parties or by operation of law. Operation of law मैंने जो बताया कंपनीज एक्ट में जो चार्ज क्रिएट करने का जो राइट दिया है वो. A mortgage deed must be registered and attested by two witnesses. A charge need not be made in writing, and if reduced to writing, it need not be attested or registered. In certain types of mortgages, the mortgage can foreclose. ठीक है.
इन चार्ज द रेमेडी ऑफ द चार्ज होल्डर इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ओनली, मतलब जो रेमेडी है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए जो राइट्स है उसके लिए ही उसके पास होती है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंग्लिश मॉर्गेज एंड द मॉर्गेज by the conditional sale. English mortgage, where the mortgagor binds himself to repay the mortgage on a certain date and transfers the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a provision that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the money as agreed of the transaction is called English mortgage. मतलब English mortgage क्या है? कॉम्बिनेशन इंग्लिश मॉर्गेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मॉर्गेज एंड कंडीशनल सेल। अब इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है दैट अपने पोजीशन possession दे देता है बट ओनरशिप नहीं देते। where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to provision that he will retransfer it to the mortgagor। मतलब इसमें क्या है कि वो दे देता है सामने वाले को, वो सामने वाले को प्रॉपर्टी दे देता है बट वो ऐसा सेल रजिस्टर नहीं करता, वो मॉर्गेज तरीके ही रजिस्टर होता है। बट जब वो पूरा पेमेंट कर देता है तब इसको फिर से इसको प्रॉपर्टी दे देनी है, तो वो इंग्लिश मॉर्गेज है। बट इन दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज कंडीशनल सेल में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज विद द कंडीशन superadded that in event of the failure by the debtor to repay the debt at the stipulated time, the transaction should be regarded as a sale. In case the loan is repaid within the stipulated time, the sale shall be invalid, or on condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller। मतलब इसमें क्या है? पहले से ही सेल बुक कर देना है, बट अगर पेमेंट आ गया उसके पास, तो फिर अगर पेमेंट आ गया तो ये सेल इनवैलिड हो जाएगा। अगर पेमेंट आ गया तो ये सेल इनवैलिड हो जाएगा। सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंग्लिश, द प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली सोल्ड टू द मॉर्गेजी by in mortgage by conditional sale, the mortgage property is conditionally sold। मतलब इसमें पहले से ही उसको दे दिया, इंग्लिश मॉर्गेज में दे देता है फिर ले लेता है। फिर पर्सनल लायबिलिटी, द मॉर्गेजर हैज पर्सनल लायबिलिटी टू पे द डेट, द मॉर्गेजर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी टू पे द डेट। मतलब अगर नहीं किया तो भाई वो सेल कर देगा। फिर राइट ऑफ फोरक्लोजर, द हैज नो राइट ऑफ फोरक्लोजर, द मॉर्गेज हैज राइट ऑफ फोरक्लोजर। मैन maximum profits, the ownership is transferred to mortgage and the mortgage enjoys the right of having the profit if mortgagor commit default, right of property can be transferred to the mortgagee। Possession, the mortgagor has right to the possession, the mortgagor has no such right। मतलब मैंने जो बोला ना ये वाला थोड़ा उल्टा बोल दिया शायद। इंग्लिश मॉर्गेज में है ना, इंग्लिश मॉर्गेज प्रॉपर सेल हो जाता है, उसको सेल बुक उसके पास चला जाती है, पोजीशन सब चला जाता है, और फिर अगर उसने रीपेमेंट कर दिया तो फिर उसको वापस दे देगा, तो वो इंग्लिश मॉर्गेज। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्जन एंड रिमाइंडर अंडर द टोपा। Reversion means any future interest kept by the person who transfers property to another। A reversion occurs when owner of the property makes an effective transfer of the property to another but retains some future right to the property। Example, if Ram transfers a piece of property to Shyam for life, Shyam has the use of the property and for the rest of his life। Upon his death, the property goes back to Ram, or if Ram has died, it goes to his heirs। Shyam's interest in the property is the life estate। Ram's ownership interest during Shyam's life and his right or the right of his heirs to take back the property upon the Shyam's death is called the reversionary interest। मतलब तूने एक बंदे को दे दिया, ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दी, बट अगर ये मर गया या फिर उसको कुछ भी हुआ और अगर ए के पास ऐसा राइट है कि उसके पास फिर से वो प्रॉपर्टी आ सकती है, तो वो रिवर्जनरी इंटरेस्ट होता है। फिर रिमाइंडर, अ रिमाइंडर इज अ फ्यूचर इंटरेस्ट दैट इज क्रिएटेड in some person other than the grantor or transfer। Example, if Ram transfers property to Shyam for life, then to Kiran's interest would be a remainder। मतलब ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और बी को बोला कि भाई तू सी को दे देना, तो ये जो सी का जो इंटरेस्ट है वो रिमाइंडर इंटरेस्ट है। डिफरेंस बिटवीन रिवर्जन एंड रिमाइंडर, रिवर्जन डिफर्स फ्रॉम रिमाइंडर बिकॉज रिवर्जन arises through the operation of law rather than the act of the parties। A remainder is a future interest created in some person other than the grantor, whereas reversion creates a future interest in the grantor or his heirs। मतलब अपन ने देखा रिमाइंडर क्या है कि अपने पार्टी अपने पास ही आ जाती है या फिर अपने बच्चे के पास ही आ जाती है, बट उसमें ऐसा नहीं होता, किसी और को ग्रांटर के अलावा किसी और के पास प्रॉपर्टी चली जाती है, राइट चला जाता है। फिर नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन सब मॉर्गेज एंड puny mortgage, where the mortgage transfers by mortgage his interest in the mortgage property or creates a mortgage of a mortgage। The transaction is a sub mortgage। मतलब एक mortgage पे दूसरा mortgage चढ़ा दिया, where A mortgage is out to B for 10,000, B mortgage is mortgage right to C for 8,000, B creates a sub mortgage। पहले mortgage था उस पे फिर mortgage create कर दिया। फिर puny mortgage, where the mortgager having mortgages property mortgages to another person to secure another loan। The second mortgage is called a puny mortgage, where A mortgage is out worth rupees 1 lakh to B for rupees 40,000 and mortgages the same house to C
for a further sum of rupees 30,000, the mortgage to B is first mortgage and that to C the second or puny mortgage. C is the puny mortgagee and can recover the debt subject to the right of B, the first mortgage to recover his debt of 40,000 plus interest. मतलब ये क्या है, इसमें क्या किया, ए ने बी को दिया, दूसरी तरीके से देखते हैं, ए ने बी को दिया और बी ने सी को पकड़ा दिया। इसमें क्या होता है, ए ने आधी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, मतलब आधे प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज बी को दिया और दूसरी आधी प्रॉपर्टी के लिए सी को दिया, तो इसको 40,000 दिया और इसको 30,000 के तक का मॉर्गेज करने के लिए अलाउ किया। तो ये हो गया प्यूनी मॉर्गेज और सब मॉर्गेज में एग्जांपल दे दिया। फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये रेरा वाला चालू हो गया। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मींस अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट द real estate project has been developed according to the sanction plan and specifications approved by the competent authority. Occupancy certificate means a certificate issued by the competent authority permitting the occupation of any building which has provision for civic infrastructure such as water, sanitation and electricity. मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब ये अब रेडी टू यूज हो गया भाई, कर ले। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से पूरा बन चुका है, तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। What it shows, completion certificate shows that the building construction is done as per approved plan, जो मैंने बोला। Occupancy certificate shows that the building is ready to occupy as necessary facilities like water, lift, sanitation and electricity etc. are made available by the builder. Occupancy certificate मतलब भाई सब तैयार हो गया भाई, आप घर पे रहने के लिए आ जाओ। Completion certificate क्या है कि जब डन एज पर अप्रूव प्लान, जो प्लान बना था उसके अनुसार तो हो चुका है, तो उसको अपन बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड first once the construction of property is completed. After issuance of completion certificate and getting confirmation that necessary facilities are made available for occupancy by people, occupancy certificate is issued। उसके बाद किया जाता है सेक्शन 2Q, इसको 2ZF पे ऑफ द एक्ट में किया गया है। फिर कारपेट एरिया, कॉमन एरिया। कारपेट एरिया मींस द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, net usable floor area of an apartment. Carpet area does not include, carpet area क्या क्या include नहीं करता, area covered by the external walls, areas covered by the service shafts, balcony, veranda, open terrace. However, carpet area includes the area covered by the internal partition, मतलब अगर internal partition of walls है तो वो cover कर दिया जाता है। फिर common area, carpet area and common area means the entire land for real estate project or whether the entire land for the real estate project whether or where the project is developed in phases and registration is sought for a phase, the entire land for the phase, the staircases, staircase and lift lobbies, fire escapes and common entrances। कॉमन एरिया का होता है। फिर कॉमन बेसमेंट, टेरेसेस, पार्क्स, प्ले एरियाज, ओपन पार्किंग एरियाज, the premise for the lodging of persons employed for the management of the property, installations of central services such as electricity, gas, water and sanitation, the water tanks, sumps, motors, fans, compressor ducts and all apparatus connected with installations for common use, all community and commercial facilities provided in the real estate project, all other portion of the necessary। कुछ नहीं है, कॉमन एरिया का होता है, वेरी सिंपल है। जो 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 चीज कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कॉमन ऑफर। Distinguish between offer and invitation to offer. A person is said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence। Offer मतलब आपने ऑफर किया। Said to have made an offer when he signifies to another his willingness to do or not to do, willingness to do or to abstain from doing with a view of obtaining the assent। सामने वाले से भी व्यू मिलना चाहिए। Something by which a person is invited to make an offer is known as invitation to make an offer। भाई तू invitation दे तो उसको invitation to offer बोलेंगे। Offer is defined as per section 2 and invitation to offer is not defined in the contract at 1872। Offer when accepted becomes agreement and invitation to offer when responded results into offer। मतलब invitation to offer अगर accept हुआ तो वो offer में convert हो जाएगा। Kiran says to Gopal, will you purchase my motorbike for 15,000? In this case, Kiran is making offer to Gopal as Kiran signifies his willingness to Gopal to sell his motorbike for 15,000। Display of goods by shopkeeper in his window with prices marked on them is not offer but merely an invitation to public to make an offer। Then distinguish between misrepresentation and fraud। Misrepresentation and fraud. Fraud means and includes any act committed by a party to a contract with intent to deceive other party or induce him to enter into the contract। Fraud मतलब deceive, intent to deceive other party or induce him to enter into the contract। तो वो fraud होता है। Misrepresentation is a false statement which the person making it honestly believes to be true। मतलब
मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है कि जो बोल रहा है उसको लग रहा है कि ये सही है, पर वो एक्चुअल में गलत है, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। फ्रॉड मतलब भाई उसका इंटेंशन ही डिसीव करने का था। फिर इंटेंशन टू डिसीव, फ्रॉड इज डेलिब्रेट और विशुअल, तो मैंने बोला देयर इज क्लियर इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, इट इज एन इनोसेंट रॉन्ग, मतलब उसको पता नहीं था, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। बिलीव द पर्सन मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब उसको पहले से ही पता है, फ्रॉड वाले को तो पता ही है कि भाई ये गलत था, मैंने जो बोला है ना वो भाई गलत ही बोला है। Then misrepresentation, the person making the statement believes it to be true but does not know that it is false। दोनों हो सकता है, या तो उसको ही लगता है कि वो सही है बट, या तो दूसरा हो सकता है कि उसको लगता है कि ये फॉल्स नहीं है। फिर रेमेडी, इट entitles the aggrieved party to claim damages in addition to the right of rescinding the contract। It only gives a right to avoid the contract without any claim for damages। मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन में इट ओनली गिव्स अ राइट टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्लेम नहीं हो सकता, बट इट एंटाइटल्स एग्रीड पार्टी टू क्लेम फॉर डैमेजेस, मतलब इसमें डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं इन द एडिशन टू द राइट ऑफ रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को भी एंड कर सकते हैं। फिर punishment in certain cases it may lead to prosecution for an offense IPC, it is not a criminal act and hence not punishable। So here we stop for the part 1 of the distinguished series। I will get with the part 2 of the difference series in some while।